for sustainable mining. We have studied it. There is no problem in restarting it. We will restart it in a sustainable, manageable way, legal way, and we will do it as soon as we come to power. Yeah, Sushant. हेलो राहुल जी, मैं सुशांत फ्रॉम गोमंतक. मेरा सवाल है कि वाई यू फील दैट कांग्रेस विल कम इन पावर इन गोवा, एंड सेकंड क्वेश्चन, इफ यू फॉल शॉर्ट ऑफ सम सीट्स और will you be in alliance with TMC, AAP and others? We have a vision for Goa. Some of the points are written on the board over there. I'll go into a little bit of detail. We have proposed a Nyay scheme, 6,000 rupees a month to needy families, 30% reservation for women in government jobs. A central idea that we have proposed is 500 crores for employment generation, which I mentioned is very, very important for the people of Goa. And then what you already mentioned, scrapping of the idea of the coal hub. I'd like to go into a little bit of detail about the central issue that is facing Goa, that is unemployment, and why the people of Goa feel that Congress party is best positioned to solve this problem. And I would like to give you a sense of what some of our ideas are. We propose to focus this money and our energies on making Goa into a IT hub and a knowledge hub, so that many, many young Goans can get a job in the IT industry and be connected not just to the rest of the country, but to the rest of the world. We also, as I've mentioned, are going to allow legal and sustainable mining. This will give large numbers of jobs to the people of Goa. And then the most valuable thing that Goa has, your spirit and the tourism, as a huge asset for the people of Goa. We will protect that asset. I've spoken to different stakeholders in the tourism industry. We have had deep discussions with them, and we have a plan to completely rejuvenate the tourism industry. So we have concrete proposals for the people of Goa, and I'm confident we're going to win the election. I think we will get a full majority. So the question of alliances and stuff doesn't really come into play. Yes, sir. I'm Rupesh from PTI. Press Trust of India. Let him ask the supplementary question. Seats. तो क्या होगा? We won't fall short. I think we'll be well above the majority mark with ease. Yeah, Anil bhai. राहुल जी, मैं अनिल भाई नवप्रभा से बोल रहा हूँ कि इस इलेक्शन में जो कोई कांग्रेस के डिफेक्टर जो थे उनका विनिंग के लिए ज़्यादा चांसेस था, ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर आपने टिकट क्यों नहीं दी? ऐसी गलती की नहीं, ऐसे नहीं लगता है आपको? हम गोवा की सरकार बनाना चाहते हैं. हम गोवा की जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं और उसका हम आदर करना चाहते हैं. गोवा की जनता ने हमें कहा कि हमें डिफेक्टर्स नहीं चाहिए, और हमने उस बात को दिल से एक्सेप्ट किया, और एक भी डिफेक्टर को हमने टिकट नहीं दिया. युवाओं को हमने अपॉर्चुनिटी दी. अगर आप हमारे टिकट्स देखें, फ्रेश फेसेस, नए फेसेस को हमने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा की राजनीति को अब बदलना है. एक नए प्रकार से, एक नई सोच के साथ हम आगे जाना चाहते हैं, और हम गोवा के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एक बातचीत करना चाहते हैं. ये हमारा जो मैनिफेस्टो बना है, ये जो हमने निर्णय लिए हैं, ये गोवा की जनता ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया और हमने वो किया. और ये जो डिफेक्टर्स पे जो हमने डिसीजन लिया है, ये गलत डिसीजन नहीं है. ये बिल्कुल 100%
right decision. Yes, sir, I'm Yeah, Rupesh, Rupesh, yeah. Sir, I'm Rupesh from PTI. BJP has been raising one poll plank right now, is that Jawaharlal Nehru delayed liberation of Goa, and that's why Congress is enemy of Goa. How do you react to that? Well, everybody has a particular role, right? So, for example, I see myself today, I see my role as ensuring that Goa gets a government that represents its voice. The Prime Minister also has a role. He cannot come to you today and say to you, I gave you jobs, I gave you employment, I fixed your problems, I stole your last government. He can't say that to you. So he has to distract you. His role is to distract. His role is to take you away from your issues and to distract you. Now the fact of the matter is that freedom fighters have commented on this issue. This is an issue that has come up before. Freedom fighters have commented on this issue. Academics have commented on this issue. The sad fact is that the Prime Minister doesn't quite understand the history of those times. He doesn't understand in detail what was going on post-World War II. Rahul, Hello, sir. this is Mayura One minute. Ramanji was waiting to ask a question for a long time. Yes, Ramanji. Can I? राहुल जी, आप तो कॉन्फिडेंट हैं कि गोवा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन कल नरेंद्र मोदी की रैली थी यहीं पे गोवा में और उन्होंने कहा कि गोवा उनके लिए काफ़ी लकी है। 2002 में जब उन्हें हटाने की बात हो रही थी तो यहीं पे कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस मुक्त भारत उनके मुंह से अचानक निकल गया, जो कि अभी देश के कई लोगों के मन में ये समा गया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करती है, युवाओं के मन में जो बातें रहती है उसे कभी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाएगी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी, आपने अभी सवाल का जवाब दिया कि इतिहास को अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद पुर्तगाल के शासनकाल से आज़ाद नहीं कराया, जबकि सरदार पटेल ने हैदराबाद से लेकर कई दूसरे स्टेट को आज़ाद कराया। तो आपको लगता है कि इतिहास को अपने हिसाब से पेश करके गोवा के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं वोट डालने के लिए? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन है। गोवा को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, गोवा को टूरिज्म इंडस्ट्री को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, गोवा को अपने भविष्य की बात करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल यहाँ पे उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव के समय पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? आज वो क्यों नहीं कहते? आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं रोजगार दिलवाऊंगा? आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा? आज क्यों नहीं कहते कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटली फेल है और गोवा की जनता जानती है गोवा में बीजेपी ने क्या किया। Rahul, hi. This is Herman Gomes here from CNN News 18. One thing I need to ask you is, you speak about 500 crore for employment generation. From where exactly do we see this sort of funding coming in? And secondly, I'm just taking the liberty of asking you this question because in the neighboring state of Karnataka, as you're aware, you know about the hijab issue where girls were not allowed inside the classrooms wearing the same. What are your thoughts on the same? Just these two questions. Well, the first, what was your first question? The 500 crore employment generation. We have done the calculations. There is no issue with getting hold of this money as far as employment is concerned. My focus today here, right, is about the Goa election. I'm not going to fall into your trap of getting distracted by issue A and issue B. I'm very clear. I've come here to have a conversation with the people of Goa. This is about the future of the people of Goa. This is about employment. This is about tourism. This is about not turning Goa into a coal hub. This is about the environment, and that is what I'm going to discuss here. I'm Prajakta Joshi. One minute. About the second question on the hijab. I said I'm not going to get into a conversation that is going to, one second.
I'm not going to get into a conversation that is going to distract the people of Goa. I'm not interested in doing that. I've come here with a clear mission. My mission is to focus on what is important for the people of Goa. Now, the request is, now Rahulji has been addressing national issues everywhere. Yes. Now he is in Goa to speak about Goa. Yes. This will be a last question because No, I have we one have question, please. No, one question, please. No I problem. was already It's about behind. Goa only. Yeah. So, I'm Prajakta Joshi from Indie Journal Pune. Actually, Congress, the whole discussion this time has been how Congress MLAs, those who get elected after elections, they tend to defect. It happened last time in Goa also, and how even if they are elected as Congress MLAs, they tend to go to BJP, or later they tend to go to some other party, is the discussion this time. So how does the party plan to address this issue this time? They don't tend to go. They didn't tend to go the last time. They were paid money to go. This time we are going to get a solid majority, and we are going to act immediately to make sure that we have a government in Goa. Thank you. I have a question. I just have last a question. question. Just Because one we more. have to address a meeting in Kurchore, Right. which is nearly Right. 45 Don't minutes. worry. So this question is about the Congress candidates have taken a pledge of loyalty this time before the election. And this is something that your political opponents have ridiculed, and they've said that this shows that a lack of faith by the party in their candidates. So, and they have said that if the party does not trust its candidates, why should the people? So how do you respond to that? No, I think that function was a demonstration of intent. It does not mean that we do not trust our candidates. It is a demonstration of intent, and it is a demonstration that we feel that we have a group of candidates who have integrity and who are going to work to form a government in Goa. Rahul ji, Bhushan Shinde from Last ANI News. question, please. ओके राहुल जी, भूषण शिंदे फ्रॉम ANI न्यूज़. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा में आए थे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई वो गोवा के 100% लाभार्थियों तक पहुंची, और उन्होंने उसके बाद सेक्युलरिज्म की एक नई परिभाषा कही. उन्होंने कहा कि 100% योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचना मतलब ही सेक्युलरिज्म है. एंड आपका सवाल है, स्टेटमेंट है, क्या है ये आपका सवाल? क्या है आपका? उनको नरेंद्र मोदी जी को ये समझाना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने गोवा के लिए क्या किया. उनको ये बताना चाहिए कि गोवा के युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए उन्होंने क्या किया. उनको ये समझाना चाहिए कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने क्या किया. आज अगर आप गोवा की जीडीपी देखें, हिंदुस्तान की जीडीपी देखें, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है उसको देखें, प्राइम मिनिस्टर को उस चीज़ पे कमेंट करनी चाहिए. प्राइम मिनिस्टर को ये भी समझाना चाहिए कि उन्होंने ये जो 3 किसान बिल जो लाए हैं ये किसके लिए लाए हैं. तो प्रधानमंत्री को इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए. मैंने शुरुआत में बोला, नरेंद्र मोदी गोवा इसलिए आए हैं कि वो गोवा को सही मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. जो मेन मुद्दा गोवा के सामने है, रोजगार कैसे पैदा होगा, इन्वायरमेंट, उनके मैनिफेस्टो में इन्वायरमेंट शब्द ही नहीं है, जो गोवा के लिए सबसे जरूरी चीज है. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन्वायरमेंट के बारे में बोला, कुछ बोला? उन्होंने रोजगार के बारे में कुछ बोला? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? नहीं ना. तो सवाल तो वो है. थैंक यू वेरी मच. Thank you, everyone.